ତମେ ମୋତେ କୁହ what is binomial nomenclature? Ayushman Babu, what is binomial nomenclature? Naming of a species, type of species Into into a scientific way. In the first will be the representation of first will genus be genus name, second will be कौन and species name. species name. तो first कथा है naming of a organism such that it has two names, a generic name and a epithet name, specific epithet name. The generic name represents the name of the genus and specific epithet represents the name of the species. Okay, so it was discovered by whom? Carlos Linnaeus. Carlos Linnaeus is started the system of nomenclature. Okay, then it has, for example, mango. Mango's name is Mangifera indica. Mangifera represents genus and indica represents specific epithet. Some rules that the name should be Latin written in italic. So they are Latinized or derived from Latin, irrespective of their origin. The first name represents the genus and the second name represents the specific epithet. Both of them name when written, handwritten, are underlined separately or are printed in italic to indicate their Latin origin. Okay, the first word of the genus starts with a capital while the epithet starts with a small letter. So it can be illustrated with the example Mangifera indica. ଏଇ ଜାଗା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରାଇଟ୍। ହଉ ଆମେ ଆଜି ୟାଠୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। So we should understand a few things and realize the name of the author appears after the specific epithet. तो केबे केबे कौन हुए ऑथर नाटा स्पेसिफिक एपिथेट पर आसे ऑथर नाटा कौन आसे ना पर आसे हला जेंते कि मैग्निफेरा इंडिका इन माने एटा रिप्रेजेंट करछि केटी ताकू किए ऑथर किए ताकू बाहर करछि लिनियस करछन्ते हला। The name of the author appears after the specific epithet at the end of the biological name and it is abbreviated in the form. Abbreviated माने कौन ताकू कौन करा जाए छोटा करके लिखा जाए. It indicates that this species was first described by Linnaeus. Magnifera indica Lin माने कौन Linnaeus ताकू कौन करथिले प्रथमे से स्पीसीज को आंब को किए डिस्क्राइब करथिले Linnaeus बुझल तापर एटा को लैंग्वेज एटा को ये फ्रंट रे हबो लैटिन इटालिक फॉन्ट रे अच्छा लैटिन ना इटालिक इटालिक फॉन्ट रे हबो एमती रहबा ना Magnifera indica Lin. Since it is nearly impossible to study all living organism, it is necessary to devise some measures to make this possible. कौन आमे सब जिनसटा पढ़ी पारिबा कि इंडिविजुअली तो आमको ताको कौन करा पड़ियो सब जिनस को पढ़िया पई आम गोटे मेथड बाहर करा पड़ियो आम ताको कहबा क्लासिफिकेशन कौन कहबा क्लासिफिकेशन. Classification is the process by which anything is grouped into convenient category. को भी जिनस convenient category कौन हबो ग्रुप हबो. क्लियर हला ना नहीं. नेक्स्ट देखिबा for example we easily recognize groups such as plant or animal or dog, cat, insect. The moment we use any other term, we associate different character with the organism in the group. What do you imagine when you think of a dog?
कौन तुम इमेजिन करछ तुम डॉग विषय भावुच obviously you see a dog not a cat. If we were to think of Alsatians we'll know what we are talking about. Alsatians विषय भाबे जदि Alsatian गोटे कुकुर कैटेगरी देखो Alsatians a species गोटे ब्रीड जर्मन रो देखा छे जर्मन से पढ़ी हाँ या कोई Alsatians कहते देखा छे तो आमको किछटा फीचर देखा तो ना नहीं हाँ चबी थी मोटा थी बहुत फर थी ना नहीं ओके obviously each of them will see a dog not a cat. તમે Alsatian વિશે ભાબ્યો what were you thinking about dog. Similarly suppose we are saying mammal धर आमे कहूचे mammal तो तुम mammal विषय likewise जिते आमे mammal विषय कहूचे तुमको गोटे एनिमल भाबिबो जार एक्सटर्नल ईयर अछि आउ बॉडी हेयर अछि बुझेला ना ना क्लियर है को अरे क्लियर है तो वी वेर कौन to say mammal you would of course think of an animal with external hair and external ears and body hair. Clear है लगे जाएंगे. Likewise in plants जितने हमें कहे wheat तम मुंडो कौन सी वो wheat plant ऐसे ना rice plant ऐसे हो तो hence all these dogs, cat, rice, mammals are convenient category to use study organisms. Scientifically हमें देखो taxa को हमें देखो कौन को taxa. Scientifically call it taxa. Hello. We call it what? Taxa. Here you must recognize that taxa indicate category at different levels. तो ये taxa कौन recognize करची? Taxa as कौन category at different level. जदि मु कहि plants गोटे taxa, wheat गोटे taxa, animal गोटे taxa. तो it represents different levels. हेला सब माने निट स्पीसीज काली बहुत ना स्पीसीज जेनस ऑर्डर क्लास फैमिली ये सब कौन गोटे गोटे लेवल टैक्सार है तो व्हीट इज ऑल्सो ए टैक्सा कौन एनिमल इज ऑल्सो ए टैक्सा डॉग इज ऑल्सो ए टैक्सा ये सब कौन गोटे गोटे टैक्सा. क्लियर है हाँ ठीक है किसी डाउट अच्छे जाएंगे लिखे नहीं जाएंगे लिखे मतलब hence based on the all living organism classified into different taxa तो आमे कौन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा रे क्लासिफाई करि परियो. ठीक है this process of classification is called taxonomy. ये जो आमे टैक्सा रे क्लासिफाई करले ऑर्गेनिजम्स को या कमे कौन कहबा टैक्सोनॉमी कहबा बुझि पालो ना ना अरे क्लियर है तो व्हाट इज टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन एंड एट डिफरेंट लेवल्स इनटू डिफरेंट टैक्सा. आमे डिफरेंट टैक्सा रे ताको कौन करबा क्लासिफाई करबा. टैक्सोनॉमी रे तीनटा जिंस आसीबो प्रथम आसीबो आइडेंटिफिकेशन सेकंड कोन आसीबो नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन मन रेबो. टैक्सोनॉमी रे कोन आसीबो नोमेनक्लेचर ए जाएंगे. क्लियर है
ना को पार्ट रे डाउट अछि को बुझिबल आगो जिवा ठीक अछि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell development ए सबू आम यूज कर मॉडर्न फील्ड ऑफ टैक्सोनॉमी रे आजिकली आम कौन यूज कर ऑल दिस व्हाट आर दे आवर इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर internal external structure cell structure development process ecological information ए सबू essential of an organism are essential for taxonomy taxonomy ପାଇଁ ए सबू important कौन external internal structure structure of cell ହେଲା ecological information बस hence characterization identification classification and nomenclature are the basic features of taxonomy तो कौन कैरेक्टराइजेशन में कौन हमें कैरेक्टर देले कहले आइडेंटिफाई करके भी तो कैरेक्टर दरकार ना तो कैरेक्टराइजेशन identification classification and nomenclature taxonomy is not something new humans have been interested in knowing more and more about various kinds of organisms particularly in reference to their own use in early days human beings needed to find source for their food for need for food clothing and shelter आगुरु ऑर्गेनिजम्स मान कौन दरकार होता हेलो फूड क्लॉथिंग शेल्टर ପାଇଁ सोर्स दरकार होउथिला hence the earliest classification was based on the uses of various organism तो आगुरु कौन हला ना केमती क्लासिफाई करा होतला यूज को नहीं कि बहुत ऑर्गेनिज्म रो हला टेक फायर कौन एमती भी होतला आ गोटे भी अच्छी लैंड रे जे रोला ताको गोटे ऑर्गेनिज्म कहते ना नहीं aquatic organism terrestrial organism amphibians ये सब क्लासिफिकेशन आगु होइछ कोड रहउछन से माने सेमती तांकर व्यवहार कोन को ऑर्गेनिज्म रो humans were since long not interested in knowing about different kinds of organisms and diversity but also the relationship among them that is कौन हला humans are interested in two things कौन कौन प्रथम interested in knowing more about a different kinds of organism and their diversity and the relationship between them आगण तांको भितरे जो संपर्क अछि this branch of study is known as systematics तक हमें कौन कहू ए ब्रांच ऑफ स्टडी को हमें कहू systematics what do you say it systematics the word systematics is derived from the latin word systema which means arrangement ए वर्डटा कोठू आसी सिस्टमा शब्द आसी को शब्द आसी सिस्टमा लैटिन वर्ड सिस्टमा जहाँ माने कौन अरेंज करवा बुझिपार ना ना सिस्टम माने कौन अरेंज करवा है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स बुझिपार ये जाए ना कोड डाउट रहा कह यहाँ है चार्टा फीचर कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर तापर नेक्स्ट आम सिस्टमेटिक्स कहूँ क्या ए ब्रांच ऑफ स्टडी को कोटा क्या डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को जानिबा आ तांको भीतर रिलेशनशिप को फाइंड करवा सिस्टमा माने सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्लियर है ना ना बुझिपार जाएंगे
आगू जीवा ओके Linus used Systema Naturae as the title of his publication. Linus जो बही लिखिले से बहीर टाइटल कौन थिला Systema Naturae माने कौन से गोटे सिस्टम क्रिएट करथिले कहा पई नेचर रा ऑर्गेनिजम्स मानन को क्लासिफाई करबा पई ए स्कोपटा कहा ए बुक रो स्कोप कौन द बुक scope of listing was later enlarged to identification classification as well हैला बुझी पारलो ना ना ता आगुर सेटा खाली क्लासिफिकेशन को नहीं करथिले सिस्टमटा को हैला तापरे तको कोन आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन तीनटा को मिसई देले एथरे ऑर्गेनिजम्स कर परस्पर भीतर रिलेशनशिप को भी अकाउंट को निया जाए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कागो निया जाए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बुझी पारलो ना कौन तो डाउट अछि को बुझियला अरे क्लियर है बुझियला तो नेक्स्ट हमें कौन पढ़ा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है तो केतटा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी अछि देवेश सिंह चारटा फास्ट है डोमेन तापरे है किंगडम बा फाइलम तापरे है क्लास तापरे ऑर्डर तापरे फैमिली तापरे जेनस तापरे स्पीसीज एटा कहंती कौन कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन है छाड़ा तब अच्छे से सेट करवा बेटा चार छोटा लगा ओके एजेंट क्लियर है कॉन्सेप्ट ना ना ठीक है चल आपको जीवा देखिए कौन अच्छी एथरे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in it. तो कौन classification is a कौन classification involves hierarchy of steps. Each represents a rank or a category. Let me show you that. कहा कथा कथा हो हम देखो से
देखा अच्छे एटा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की एथे सभा ऊपर आसुची कि स्पीसीज तापर जेनस तापर ऑर्डर क्लास फाइलम किंगडम तापर आउट अच्छी कहते डोमेन कहती डोमेन यहाँ भी कहीपर देखा अच्छे हाँ डोमेन किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जेनस species. So since category is a part of overall taxonomical arrangement, it is called taxonomical category. All category together constitute a hierarchy. So category कौन मानुचंदी hierarchy मानुचंदी. Each category referred to as a unit of classification. In fact, represents a rank commonly known as taxon. तो कौन ये जो कैटेगरी गुड़ाक अच्छी आम टैक्सन कहूँ ये गोटे रैंक रिप्रेजेंट कर रिप्रेजेंट कर रैंक क्लीयर है गोटे आरेंजमेंट वे ओवरऑल गोटे आरेंजमेंट होती आम सीधा कैटेगरी कहूँ यहाँ गोटे हायरार्की बेसिस रे आरेंजमेंट क्या बेसिस रे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बेसिस रे ये आरेंजमेंट बुझिपार ना एत कौन डाउट रोज कह क्लीयर है एटा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बुझिपार केमती अच्छी हाँ ओके आगु जावा ताले हाँ taxonomical categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insect represents a group of organisms sharing a common feature. टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी हायरार्की चलो गोटे एग्जांपल सहित बुझा देखा एग्जांपल इनसेक्ट इनसेक्ट मानकर गोटे ग्रुप गोटे कॉमन फीचर अच्छी धर कौन ना 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स गोड़ गुड़ाक जोड़ी थी इट मीन्स इनसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइज concrete objects which can be classified and thus given a rank or category. Can you name the such a rank or remember the group represents category. Category denotes rank. Category कौन represent करछि rank को represent करछि. Each rank or taxon represents a unit of classification. Represents a कौन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. तो कौन धर मत किए कहला कि जॉइंटेड लेग थिबा वाला इनसेक्ट तो सब जो इनसेक्ट रो क्लासिफाइंग फीचर कौन हम जॉइंटेड लेग्स है ताकू ही आम कहबा इट इज ए रैंक बा गोटे कैटेगरी. तो प्रत्येक ग्रुप गोटे कैटेगरी को रिप्रेजेंट करछि बा गोटे रैंक को रिप्रेजेंट करुछि. गोटे रैंक को आम कौन कहू टैक्सन को कौन कहू टैक्सन है दैट इज द यूनिट ऑफ व्हाट क्लासिफिकेशन. बुझिपाल दिस टैक्सोनॉमिकल यूनिट्स टैक्सोनॉमिकल यूनिट्स को these taxonomical units are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. A taxonomical category कौन distinct groups है कौन distinct groups. ओके रिप्रेजेंट बुझीगला. The taxonomical studies of all known organisms have led to development of common categories. तो ये सब जिन को स्टडी करिकी कौन कौन कैटेगरी बनचे देख. फास्ट है किंगडम तापरे फाइलम बाय डिवीजन तापरे क्लास ऑर्डर फैमिली जेनस एंड स्पीसीज. तो all taxonomical studies have led to the development of common categories such as
किंगडम फाइलम ऑर्डर फैमिली जेनस स्पीसीज ये सब डेवलप हेज ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी तांकर लोएस्ट कैटेगरी किए अरे स्पीसीज now the group you may ask is how to place an organism in various category the basic requirement is the knowledge of character तो यही जिनसा करने आमर बेसिक रिक्वायरमेंट कौन आम जाना कि तांकर भितर कौन कॉमन कैरेक्टर अच्छी कौन जाना नॉलेज ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म माने भितर से जो ऑर्गेनिज्म ग्रुप रो कौन कैरेक्टर अच्छी कौन कौन अच्छी कैरेक्टर अच्छी क्लियर है हाँ ओके से अनुजाई आम जानी पारिबा नहले जानी पारिबा नहीं तो ये कैरेक्टरटा कौन ना फास्ट ऑफ ऑल आमु कौन हेल्प करियो दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलर एंड डिसिमिलर क्वांटिटी एबे धर जॉइंटेड अपेंडेजेस बा लेग्स सेटा गोटे कैरेक्टर ना नहीं जॉइंटेड अपेंडेजेस कौन गोटे कैरेक्टर एबे जहार जॉइंटेड अपेंडेजेस अच्छी सी सेम कैटेगरी आसीबो आ जहार नाही सी कैटेगरी आसीबो बुझिपारल हाँ and the among individuals of same kind of organism as well as of other clear है अरे क्लियर है ये जाएंगे इतनी था हो एटा नेक्स्ट क्लास करवा ठीक है आ गोटे क्लास हम तब चैप्टर शेष हो ओके इतनी था आज पे ठीक अच्छे